Okay, so dear learners, now we are going to learn about chapter number 14 from your NCERT book of class 10, and the name of chapter is Sources of Energy. So in this chapter, we'll be basically learning about energy, the forms of energy, or we can say the types of energy, and the sources, or the some of the very important processes from where we can generate energy. Right? एनर्जी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से हैं, कैसे हम उसे जनरेट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर इट्स यूजेस. Okay, so we are going to learn about all these things in this particular chapter. So with the very starting we have कि सबसे पहले हम okay, so you must have learned about this law in your previous classes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक सी चीज से स्टार्ट कर रहे हैं. इफ यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक और वी कैन से अबाउट दिस लॉ, सो इसके बाद में जो चैप्टर है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपको ये लॉ आता है तो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one form to another. Right? तो इसका हम क्या बोलेंगे, that energy can only be transferred from one form to another. But it can neither be created and nor be destroyed. मतलब कि जो यूनिवर्स की एनर्जी है ना, टोटल 100% एनर्जी अगर हम कंसीडर करें तो वो हमेशा 100% ही रहती है. ऐसा नहीं होता कि उसमें से कुछ एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर कुछ एनर्जी जनरेट हो जाए. नो, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि जो अगर हम हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स की एग्जाम्पल लें, जो हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स हैं, हम उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं. उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी. राइट? तो सेम वे में इस सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में एंड अबाउट वेरियस प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, तो किसी भी एनर्जी को हम कब बोलेंगे कि एनर्जी इज गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी. राइट? So some points that will decide good sources of energy. कब बोलेंगे ये जो सोर्स है हमारी, it is good source of energy. So the points, very basic points are the first one is which has high caloric value. उसकी जो caloric value है high होनी चाहिए. Which has high calorific value. Which has high calorific value. The very second point is it should be accessible, easily accessible होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि उसे जनरेट करने में ही हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए और उसे हम जो उसकी अमाउंट हम ले रहे हैं, जो हमें मिल रही है, that is not sufficient to be used. Right? The third one is it should be easy to store. अभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पास एनर्जी है उसे हम स्टोर करने के ऊपर ही इतने ज्यादा एफर्ट्स डाल दें कि उसे स्टोर करने के लिए भी और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाए. राइट? इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट. कि हमारे पास जो एनर्जी है, अभी ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जितनी की जितनी एनर्जी है, सपोज अगर हम बात कर लें, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली एंड गोवा. अगर हमारी जो एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है, इट इज इन दिल्ली और वी नीड टू ट्रांसपोर्ट इट टू गोवा. अगर हमें वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सो इट शुड बी इजी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें दिल्ली से गोवा लेकर जाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए कि वहां जो हमारी एनर्जी है वो रास्ते में ही it gets destroyed. Right? It should be easy to transfer also.
इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए, इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होनी चाहिए मीन्स कि ऐसा होना चाहिए इतनी ज्यादा हमारी जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल ना इन्वेस्ट करनी पड़े कि बाद में उससे जो है प्रॉफिट ही ना हो पाए, right? So these are some of the points which tell whether the given source of energy is good enough or not for the human consumption or for any of the processes. Okay, so now we are going to start very interesting topic, that is sources of energy. Very directly we are going into this very topic. This is sources of energy. तो इसमें सबसे पहले we have is let's draw a highlighted cloud here just to highlight the main topic. Okay, so sources of energy में we have basic two types. The first one is conventional sources of energy and the second one is non-conventional sources of energy. तो ये जो हमारा चैप्टर है इसे हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही पढ़ें सो दैट आपको भी ये रिवाइज करना इजी लगे। यहाँ पर आप साथ में लिख लेना sources of energy. I'm not going to write the whole. Okay. So we have two types of energy. First one is conventional and the second one is non-conventional. As the name suggests, इसके नेम से आप क्या आइडिया ले सकते हो ये conventional and non-conventional sources of energy क्या होने वाले हैं? Okay, so we have conventional sources of energy. हम उन्हें बोलते हैं which are present in small amount, जो हमारे पास small amount में present होती हैं and which are non-renewable. So these are present in small amounts and are non-renewable. This is the first point. And these non-conventional sources of energy are renewable in nature. इसकी हम एग्जांपल्स क्या बोल सकते हैं, like fossil fuels, right? And example of non-conventional sources is solar energy. So the example for non-conventional sources of energy, or we can say the renewable sources of energy, as we were discussing, is the solar energy, right? Solar energy में हम क्या क्या consider कर सकते हैं, like the solar cookers, solar cell panels, etc. right? तो इसके बाद में हम इसमें देखेंगे, जैसे हम कुछ पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी कैसे जनरेट होती है। जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, these are generated in the thermal power plant, hydro power plant, ओके तो अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो थर्मल मीन्स हीट, मीन्स there must be uses of heat in that power plant. Hydro means water, means वहां पर जो मेन यूजेस है किसका होने वाला है, वाटर का, राइट? तो अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये हम जनरेट करते हैं एनर्जी फ्रॉम सी, राइट? एनर्जी फ्रॉम सी, समंदर से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, जैसे कि टाइडल एंड वेव एनर्जी। I hope you must be well aware of the terms tides and waves, right? Okay, so next we have, let's have a brief discussion about renewable and non-renewable sources of energy. तो हमारे पास जो renewable sources of energy होते हैं कौन कौन से होते हैं, we are just going to discuss some of the examples so that we can understand the conventional and non-conventional in more easy way.
तो हमारे पास रिन्यूएबल कौन सी होती है? कोल, sorry, these are example of non-renewable. तो हमारे पास non-renewable और we can say the conventional sources of energy कौन सी होती हैं? So here we have non-renewable sources of energy, और जिन्हें हम और क्या बोलते हैं? Conventional. We can also call them as conventional. We can call, but we can say the another name for renewable is conventional. Okay. So इसकी हमारे पास examples कौन सी हैं? Coal, petroleum. Can you think of any other example? इन दोनों के अलावा कोई और एक example if come into your mind? हमने ये पढ़ी है in the last lecture also. That is natural gas. राइट, सेम वे में अगर हम बात करें रिन्यूएबल की, तो हमारे पास रिन्यूएबल कौन सी होने वाली है? एयर, वाटर, solar radiations, etc. Right? Now we are not going to learn all of these, but we are going to learn just 2 or 3 examples just to write in the exam if you are coming. अभी हम पढ़ेंगे about conventional sources of energy in detail. We'll be discussing each and every source, so pay attention here. Conventional sources of energy we are going to learn now. So conventional sources of energy में we have the very first we have is fossil fuels. So fossil fuels are the fuels which develop from fossils. This is very easy chapter and everything you are going to understand from the name of topic itself. And some of the examples if we want to write are coal, petroleum, etc. राइट एंड फॉसिल फ्यूल के कुछ अगर फीचर्स हम डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर नॉन रिन्यूएबल. These have limited reserves. These are formed millions years ago. Okay, so now if we want to discuss some of the disadvantages of burning of fossil fuels, right? So here we are going to write some of them. Disadvantages of burning of fossil fuels. तो disadvantages में main है सबसे पहले that they release carbon dioxide. They release oxides of carbon which are carbon dioxide, carbon monoxide. They releases the oxides of carbon. नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स भी रिलीज करते हैं which are not good for human survival. That causes air pollution. इससे हमारे पास क्या होता है? एयर पोल्यूशन.
and acid rain. Acid rain is a result of release of oxides of sulfur. तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्साइड्स भी रिलीज होती हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके कारण हमें सजेस्ट किया जाता है नॉट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट एनर्जी. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ कि देखो हमारे पास क्या है. सपोज दिस इज अ प्रेशर कुकर. Okay, this is the activity actually. The diagram, as per her diagram, it is not looking like that, but just to understand the topic, assume that this is pressure cooker and we are heating it. इसके साथ में हमने कुछ ऐसे एक apparatus सा बनाया हुआ है, एक सेटअप किया हुआ है, and right here we have a tennis ball fixed with metal plates. So okay, this is somehow like this. This is tennis ball and it is fixed with metal plate. Which is again then connected, or we can say having some structure like this dynamo, and is connected to umbrella like this. So in this form, a change in energy, change in the form of energy, we are going to study about in this chapter. Okay, so now the very next we have is hydropower plants. तो हमारे पास जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होती हैं, they convert the potential energy of falling water into electricity. हमारे पास जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं ना, उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो फॉलिंग वाटर, जो हमारे पास जो पानी है ना, वो बहुत ऊपर से गिराया जाता है एंड उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसमें क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद डैम्स. तो हमारे जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं, मोस्टली दीज आर एसोसिएटेड विद द डैम्स. और हमारे कंट्री की जो 25% ऑफ एनर्जी is obtained from hydropower plant. हमारी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन की, हमारी कंट्री की जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज फुलफिल्ड बाय द हाइड्रो पावर प्लांट्स. 25% of that energy, right? तो अभी we are going to learn some of the advantages. तो इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, देयर इज नो पोल्यूशन. जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स में पढ़ा था दैट दे कॉज पोल्यूशन, बट इफ वी टॉक ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन.
do not cause environmental pollution. Okay, so the second we have is flowing water is renewable source. कि जो हमारे पास पानी हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, जो फ्लो कर रहा है, एक्चुअली हम नहीं गिरा रहे हैं उसे, जो उसका फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज रिन्यूएबल. ऐसा नहीं होने वाला कि वो जो वाटर है दैट इज नॉन रिन्यूएबल, कि उसे जनरेट करने के लिए हमें इतना टाइम लगेगा, जैसे कुछ होने वाला है. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. फ्लोइंग वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और जो हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स also prevents फ्लडिंग ऑफ रिवर्स. वो जो रिवर्स हैं उनकी फ्लडिंग है, जिसे बाढ़ आना भी बोलते हैं हम, उसको भी प्रिवेंट करता है. एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन. ऑब्वियसली इफ समथिंग हैव इट्स एडवांटेजेस, अगर किसी चीज के एडवांटेजेस हों तो उसके कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी निकल कर आते हैं. सेम वे में ही हमारे पास जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखो, अभी हम लार्ज अगर डैम्स बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, राइट, जो फर्टाइल लैंड हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, वहां पर एक डैम बना रहे हैं, तो उससे हमें लार्ज एरिया ऑफ दैट एग्रीकल्चर लैंड, और वी कैन से फर्टाइल लैंड, वी हैव टू क्लियर इट. वहां पर जितने लोग रहते हैं, जो हमारे पास वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, जो भी काम वहां पर हो रहा है, हमें उसे एम्प्टी करना होगा. इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम फर्टाइल लैंड की जगह नॉन फर्टाइल लैंड के ऊपर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करें, जिससे क्या है, हमारे पास फर्टाइल लैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए. नो डाउट जो पीपल के सबमर्ज होने की एग्जाम वहां पर प्रॉब्लम आ रही होती है, वहां पर वहां का जो फ्लोरा फोना है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, दीज आर गोइंग टू बी कंटिन्यूड, राइट. सो लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड is submerged in water. सेम वे में फ्लोरा फोना को भी सेम ही प्रॉब्लम होती है. फ्लोरा एंड फोना इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, राइट. ह्यूमन सेटलमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. क्या होता है, लार्ज इकोसिस्टम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. So these are the main problem that we have to face when we are shifting towards the hydropower plants, right. So now we are going to learn about biomass. So इसमें हमारे पास क्या है, dead parts of plants and animals, dead parts of plants and animals, or we can say the plants and trees. Here it is a correction, plants and trees, and the waste material of animals. Waste material of animals
and man are called biomass. Okay, so इसमें the very first thing we're going to learn about is about wood, लकड़ी, right? तो सबसे पहले इसकी तो मेन जो है डिसएडवांटेजेस ही हम पढ़ने वाली हैं, क्योंकि एडवांटेजेस तो जो मेन एडवांटेज है दैट इज इन केस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जीज दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, राइट? तो इसकी हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिसएडवांटेजेस नाउ. डिसएडवांटेजेस में वी कम अक्रॉस दैट इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग. जब हम इसे बर्न करते हैं इट प्रोड्यूसेस lots of smoke during burning. It do not produce much heat. जितनी हीट चाहिए होती है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती. Okay, so now we are going to learn about the second thing, that is charcoal. तो चारकोल के बारे में यू ऑल आर अवेयर कि जब हम वुड को बर्न करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देन वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल गेट्स रिमूव. तो उससे क्या होता है कि उसमें जो वाटर है और कुछ वॉलेटाइल मटेरियल है दोज गेट्स रिमूव्ड एंड वी आर लेफ्ट विद चारकोल ओनली. Okay, so here one thing to note that is very, very important. I'm going to write here making this cloud. Okay, so charcoal is better fuel than the कि हमारे पास जो चारकोल है दैट इज बेटर फ्यूल देन दी वुड. वुड से ज्यादा अच्छा हमारे पास क्या है? चारकोल. कैसे वो हम पढ़ेंगे अभी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. बिकॉज इट हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू. इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज हायर देन द वुड. इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक. And the third one is that it is easy to handle. Okay, so now we are going to learn about the cow dung. जैसे गोबर के उपले, कुछ गांव में क्या होता है गोबर के उपले यूज किए जाते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग नाउ, दैट इज अबाउट द काउ डंग. इट इज ए बायोमास. ये बायोमास तो है बट इट इज नॉट गुड टू बर्न काउ डंग डायरेक्टली. It is for no doubt a biomass, but it is not good to burn cow dung directly as fuel. क्यों अच्छा नहीं है भाई? क्यों नहीं हमें डायरेक्टली यूज करना चाहिए? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक. आप में से जो बच्चे कुछ गांव में रहते हैं तो आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम काउ डंग को डायरेक्टली बर्न कर दें तो उसमें से बहुत ज्यादा जो है स्मोक की रिलीज होती है, स्मोक प्रोड्यूस होती है. इट डू नॉट बर्न कंप्लीटली.
ये कंप्लीटली बर्न नहीं करता, कुछ अपने जो एशेज हैं वो लेफ्ट ओवर में रह जाती हैं। इट हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लो है। ओके, सो अगेन important पॉइंट्स। बाय मेकिंग बायोगैस, तो हमारे पास अगर जो हमारे पास ये काउ डंग है, ये हमारे पास बायोमास है, बट हम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, विच इंक्लूड कि यहाँ ये अगर हम इसे डायरेक्टली बर्न करेंगे तो इससे स्मोक प्रोड्यूस होगा, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं करेंगे, एंड इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है। बट अगर हम इस काउ डंग को बायोगैस में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास जो है, हम इसे यूज कर पाएंगे टू गेट अ smokeless fuel. So by making biogas from the cow dung, we can get smokeless fuel.